Good morning. I am Chirag Sukani from Profile VB College Vapi, and I am going to teach you elements of strategic management subject. And we will continue our first chapter, that is conceptual framework of strategic management. And in that we have to learn part B, that is strategic management. And in strategic management we will learn about strategic management process. Now, in earlier session, we discussed first four step of strategic management process, that is establishing strategic intent. And what is establishing strategic intent? That is establishment of vision, mission and objective. Then second step, environmental analysis, that is analyze external factors that affect the organization. And and through environmental analysis, organization identify opportunities or threats. Then third is what? Organization analysis. Now organization analysis is what? To evaluate internal area of the organization, that is marketing, production, finance, HR, information system, general management, etc. And through organizational analysis, organization identified the strength or weaknesses. And then after, fourth step is what? Organization setting the long term objective. So this fourth step we already discussed in the earlier session. So in this session we will discuss the next step of the strategic management process, that is identification of strategic alternative, choice of strategy, implementation of strategy, strategic evaluation and control, and last is what? Feedback. Okay, now in fourth step is what? Setting the long term objective. Now we all know that for achieving one objective the organization have number of alternative. ओके यानी एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स है. सो एट द फिफ्थ स्टेप वी हैव टू आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी. So fifth step is what? Identification of strategic alternative. Now interaction of organization with its environment in the light of its strength and weaknesses will result in various strategic alternative. So this process may result in large number of alternative through which organization can relate itself to the environment. However, all alternatives cannot be chosen even if all of them produce the same result. Now it is obvious that a manager may like to limit themselves to the serious consideration of some of the strategic alternative so that they are saved from the unnecessary exercise. Therefore, strategic alternative should be identified in the light of strategic opportunities and threat which is generated through environmental analysis and strength and weaknesses generated through organizational analysis as well as organization strategic intent. So what is identification of strategic alternative? जैसे organization environment के साथ interaction करेगा will result in various strategic alternative. Okay, so in this stage the organization has large number of alternative through which organization can relate itself to the environment. Now in this stage organization have number of alternative, but all alternatives cannot be chosen even if all of them produce the same result. Okay, so always strategic alternatives should be identified in the light of opportunities and threats generated through environmental analysis and strength and weaknesses generated through organizational analysis, as well as we have to look at the organization strategic intent. That is what? Identification of strategic alternative. Take an example. Organization set the objective that is to grow in future. In the fourth step उसने objective क्या रखा? To grow in future. Now for achieving growth at the fifth step there may be alternative strategy like merger, acquisition, diversification, okay, expansion. Okay, so there may be joint venture, so there will be number of strategic alternative. That is what? Identification of strategic alternative. Clear? Now in the sixth step, that is what? Choice of strategy. Now the identification of various strategic alternative leads to the level where manager may consider some of the alternative seriously and may choose one which is most acceptable
and it should be noted that chosen alternative should be acceptable in the light of organizational objective also. So this is a stage of strategic decision process, and all factors relevant for decision making are relevant here. Now, in the choice process, apart from various organizational and the environmental factors, personal factors play the important role, because strategy always reflect personal values of the strategies. Clear? So what is choice of strategy? Choice of strategy at the fifth step there will be number of alternative. So identification of various strategic alternatives leads to the level where manager can consider some alternatives seriously and choose one which is most acceptable. So example, at the fifth step, what are the various alternative? मर्जर, एक्विजिशन, जॉइंट वेंचर, एक्सपांशन, डाइवर्सिफिकेशन, बहुत सारे थे. सो चॉइस ऑफ स्ट्रेटेजी में क्या करेंगे? मैनेजर सम ऑफ द अल्टरनेटिव को सीरियसली लेगा, ओके, और उसमें से एक सिलेक्ट करेगा विच इज बेस्ट. और जो भी आप चूज करो ना एज अ मैनेजर, जो भी अल्टरनेटिव चूज होगा ना, इट शुड बी मैच टू द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑल्सो. सो this stage is just like what strategic decision making process, because यहाँ पे डिसाइड करना है कौन सा अल्टरनेटिव सिलेक्ट करना है, दैट इज व्हाट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. ओके, सो इन द चॉइस प्रोसेस वेरियस ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स एज वेल एज एनवायरमेंटल फैक्टर्स तो अफेक्ट करेंगे ही करेंगे, बट पर्सनल फैक्टर्स प्ले द इम्पॉर्टेंट रोल. बिकॉज पर्सनल फैक्टर्स प्ले द इम्पॉर्टेंट रोल वाई? बिकॉज जो भी स्ट्रेटेजी सिलेक्ट होगा इट रिफ्लेक्ट पर्सनल वैल्यूज ऑफ द स्ट्रेटेजी. दैट मीन्स व्हाट, जो मैनेजर को अच्छी स्ट्रेटेजी लगेगी वही मैनेजर उसको सिलेक्ट करेगा. सो यहाँ पे एनवायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्ट किया, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स अफेक्ट किया, बट पर्सनल फैक्टर्स ऑल्सो अफेक्ट किया. दैट इज व्हाट चॉइस ऑफ स्ट्रेटेजी. बिकॉज आई एज अ मैनेजर, मुझे मर्जर अच्छा लगा तो मैंने मर्जर सिलेक्ट कर लिया, बट यू एज अ मैनेजर ऑफ कंपनी आपको डाइवर्सिफिकेशन अच्छा लगा तो आप डाइवर्सिफिकेशन सिलेक्ट किया. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट चॉइस ऑफ स्ट्रेटेजी. और चॉइस ऑफ स्ट्रेटेजी में एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स तो अफेक्ट करेंगे ही करेंगे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट पर्सनल फैक्टर्स ऑल्सो अफेक्टेड. क्लियर? दैट इज व्हाट चॉइस ऑफ स्ट्रेटेजी. सो आई एज अ मैनेजर मैंने क्या किया? मर्जर चूज किया. सेवंथ इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी. कि वंस स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन हैज बीन सेटल्ड, क्यों? एट द फिफ्थ स्टेप आइडेंटिफाई हो गया, सिक्स में चॉइस होगा, तो स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन स्टेज इज ओवर. सो ऑर्गेनाइजेशन ट्राई to convert the strategy into something operationally effective, that is known as what? Implementation of strategy. That is what? To bring the result, the strategy should be put to the action, because just choice of strategy will not affect organizational activity and the achievement of the objective. Clear? Now in strategy implementation, various activities involved are design of organization structure to suit the chosen strategy, then development of functional policy, allocation of resources and so on. Okay, so जैसा आपका आइडेंटिफिकेशन हो गया, चॉइस हो गया, दैट मीन्स व्हाट? स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन स्टेज इज ओवर. सो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा? जो भी स्ट्रेटेजी सिलेक्ट किया उसको कन्वर्ट करेगा इनटू समथिंग ऑपरेशनल इफेक्टिव, उसको प्रैक्टिकली यूज करेगा, सो दैट दिस स्टेज इज कॉल्ड इज व्हाट? स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन. बिकॉज अगर आपको रिजल्ट डिराइव करना है तो जो भी स्ट्रेटेजी सिलेक्ट किया इट शुड बी पुट टू द एक्शन. बिकॉज खाली स्ट्रेटेजी को सिलेक्ट करेंगे वो ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज को भी अफेक्ट नहीं करेगा, एज वेल एज ऑब्जेक्टिव भी अचीव नहीं कर पाएगा. इसीलिए क्या करना है? चूजन स्ट्रेटेजी शुड बी पुट इन टू एक्शन सो दैट रिजल्ट विल बी डिराइव. ओके, दिस स्टेज इज कॉल्ड इज व्हाट? स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन. सो मैंने मर्जर सिलेक्ट किया, मैंने मर्जर कर दिया. ओके, सो इन स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन वेरियस एक्टिविटीज इन्वॉल्व आर. मुझे क्या करना पड़ेगा एज अ मैनेजमेंट ऑफ कंपनी? दैट इज डिजाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विच इज सूट टू द चूजन स्ट्रेटेजी. देन डेवलपमेंट ऑफ वेरियस फंक्शनल पॉलिसी,
अगेन जैसे स्ट्रेटेजी चेंज होगा, आपका वेरियस पॉलिसी, फंक्शनल पॉलिसी भी चेंज होगा। मार्केटिंग पॉलिसी, प्रोडक्शन पॉलिसी, फाइनेंस पॉलिसी, एचआर पॉलिसीज भी चेंज होगा। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी चेंज करना पड़ेगा, रिसोर्सेज भी चेंज होगा। सो ये सब एक्टिविटी इन्वॉल्व होगा इन केस ऑफ स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन। दिस स्टेज इज कॉल्ड इज व्हाट? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी. Next is strategic evaluation and control. So this is the last stage of strategic management process. However, this is an ongoing process because strategic management is a continuous process, ma. So this is an ongoing process. But strategic evaluation and control should be taken as a process for future course of action. Thus, for effective implementation and consequently for the achievement of organizational objective, it is necessary that there is a continuous monitoring of the implementation of strategy so that suitable action is taken whenever something goes wrong. Okay, so the name itself suggests strategy evaluation and control. Now control का हम लोग को आइडिया पता है. कंट्रोल मतलब एक क्राइटेरिया रहता है. ओके, उसमें एक्चुअल परफॉर्मेंस आप मेजर कर दो विद द डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस. अगर एक्चुअल एंड डिज़ायर मैच हो गया, देर इज़ नो नीड टू टेक एक्शन. बट अगर आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस डिज़ायर परफॉर्मेंस से मैच नहीं होता है, देन देर इज़ अ नीड टू टेक करेक्टिव एक्शन. दिस स्टेज इज कॉल्ड एज व्हाट? स्ट्रेटेजिक इवेल्यूशन एंड कंट्रोल. ओके, सो एक्चुअली ये लास्ट स्टेज नहीं बोला जाता है बिकॉज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है. बट दिस स्टेज कैन बी कंसिडर एज व्हाट? टेकन एज अ प्रोसेस फॉर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन. यानी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हुआ या नहीं हुआ, ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुआ या नहीं हुआ. सो उसके लिए इट इज़ नेसेसरी दैट देर इज़ अ कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी. यानी कंटिन्यूसली देखते रहना है सो दैट suitable action is taken whenever something goes wrong. ओके, यानी मैंने मर्जर तो सिलेक्ट कर दिया बट मर्जर एक्टिविटीज़ को कंटिन्यूसली वॉच करना है, मॉनिटरिंग करना है कि मर्जर से जो मेरा ऑब्जेक्टिव से ग्रो करना वो अचीव हुआ या नहीं हुआ. इफ देर इज एनी समथिंग गोज रॉन्ग तो इन बिटवीन आप सुटेबल एक्शन ले सकते हो. दिस स्टेज इज कॉल्ड इज व्हाट? स्ट्रेटेजिक इवेल्युएशन एंड कंट्रोल. ओके, एंड लास्ट इज व्हाट? फीडबैक. एक्चुअली ये स्टेप्स नहीं बोला जाता है बिकॉज स्ट्रेटेजिक इवेल्युएशन एंड कंट्रोल ऑलवेज प्रोवाइड द फीडबैक कि वेदर द ऑब्जेक्टिव इज अचीव्ड और नॉट. ओके, सो मॉडल ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट डेपिक्ट फीडबैक. It should be noted that every open system has a feedback mechanism through which it measures its performance on a continuous basis and makes suitable adjustment in action for its continuous survival. Now, open system is what? Open system means it is a system that has external interaction. यानी जो भी system का external interaction होगा, this system is called as what? Open system. So organization in which strategic management is applied is an what? Open system. Therefore, strategic management should have feedback mechanism. Now, evaluation will result in various actions that the organization will have to take to be successful depending upon the situation. Such actions may be required in the area of correcting implementation of strategy, correcting choice of strategy, or change in the organizational objective, and consequently leading to change in the identification of strategy. Therefore, strategic management process should never be taken as what? Static, but as a dynamic, so that new action is taken whenever there is any change in any of the factors affecting the strategy. This is called as what? Feedback. ओके, सो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस में लास्ट क्या आएगा? ऑलवेज क्या वो डेपिक करेगा? फीडबैक. बिकॉज कोई भी ओपन सिस्टम है, ओपन सिस्टम का ऑलवेज फीडबैक मैकेनिज्म होता है. ओके, सो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का भी एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ इंटरेक्शन है. दैट इज वाई इट इज व्हाट? ओपन सिस्टम. ओके, एंड दैट इज वाई स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हैज ऑलवेज फीडबैक मैकेनिज्म. ओके, और फीडबैक में क्या मिलेगा? वेदर ऑब्जेक्टिव इज अचीव्ड और नॉट. इफ इट इज नॉट, सो वेरियस एक्शंस में बी रिक्वायर्ड. क्या क्या एक्शंस लेना होगा? दैट इज करेक्ट करना पड़ेगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी, करेक्ट करना पड़ेगा चॉइस ऑफ स्ट्रेटेजी,
ओके देन चेंज करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, और जैसा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव चेंज करेंगे रिजल्ट क्या आएगा, दैट इज चेंज इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेटेजी। दैट इज वी कैन से कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस वो स्टेटिक नहीं है, स्टेबल नहीं है, इट इज ऑलवेज बी डायनेमिक, so that new action is taken whenever there is any change in any of the factors affecting the strategy. Okay, this is what strategic management process. Clear? Now in the next session we will discuss about implication of strategic management process. Okay, thank you, bye.